So, hello guys, मेरा नाम इज़हान खान है. Currently, I'm studying in IIT Patna, where I'm pursuing my degree in Civil and Environmental Engineering. Alright. So, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे. इस पे हम लोग एग्जाम्पलर का सोल्यूशन बनाते हैं. Okay. So, let's see the first question. Hmm. Yeah. So, let's start with the first question. पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है. Limit x tends to 3, x square minus 9 divided by x minus 3. सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करके देख लूंगा. 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 3. ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहे हैं. मैंने जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाया था तभी बताया था कि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना देता है. इसलिए उसको हम लोग सिंपलीफाई, इसको अवॉइड करते हैं इस फॉर्म को. या तो आ जाए 0 बाय कांस्टेंट, या तो आ जाए कांस्टेंट बाय 0. ये तो 0 ही होता है, ये इन्फिनिटी होता है, तो ये डिटर्मिनेट है. लेकिन 0/0 क्या, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ना तो ये 0 होगा, ना ही ये इन्फिनिटी होगा. तो ये रूल्स ब्रेक कर रहा है इन दोनों के. इस वजह से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है. ऑलराइट, नाउ सो लेट्स सी. तो हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 3 where x square minus 9 is there and divided by x minus 3. ऑलराइट, सो हम लोग ने देख लिया दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सो आई विल ट्राई टू सिंपलीफाई इट. नाउ हाउ टू सिंपलीफाई दिस? A square minus b square is equals to, yeah, we know this, right? So we'll just operate this on this value on the numerator. It will become x plus 3, x minus 3 all divided by x minus 3. So what are we left with? We are left with x plus 3. If you put the limit of x in there, you'll get the value of 6, which is a determinate value. Determinate. Valid. Alright, so this will be our answer to the first question. And let's see the next question. So the next question is limit x tends to 1 by 2, 4x square minus 1 is divided by 2x minus 1. So again the same thing, a square minus b square. 4x square minus 1 को क्या लिख सकते हैं? 2x minus 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है तो ये कट जाएगा, और ऊपर एक और आएगा 2x plus 1. So limit x tends to 1 by 2, 2x minus 1, 2x plus 1 divided by 2x minus 1. So 2 into 1 by 2 plus 1. जब x की वैल्यू हम लोग ने 1 by 2 इसमें बचे हुए में पुट कर दी 2x plus 1 में, तो ये हो जाएगा simply 2, which is a valid answer. Alright, now let's see. Yeah. So the next question gives us limit h tends to a 0, whole under root of x plus h minus under root of x upon h. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं वैल्यू डाल के देखूंगा कि क्या बन रहा है. h की वैल्यू, h is tending to a 0, right? So under root x minus under root x whole divided by 0, which is 0 by 0. ये indeterminate form है ना. तो अब मुझे इसे डिटर्मिनेट बनाना होगा. So limit was h tends to a 0, and here I have under root x plus h का whole square minus under root x का whole square whole divided by h times under root x plus h plus under root x. ऑलराइट, सिंपल, यहाँ तक लॉजिकल है. ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं. तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इट विल बी h की वैल्यू 0, x माइनस x. नहीं, इसको ओपन कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं. x प्लस h माइनस x, या सो हियर विल बी h. तो न्यूमरेटर में आ रहा है x प्लस h माइनस x, डिनोमिनेटर में आ रहा है h टाइम्स अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x. ठीक, और ये क्या बन रहा है?
nothing but h divided by h times root of x plus h plus root x. ओके, एच एच तो कट गया आपस में, तो क्या बचा, h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन अंडर रूट h प्लस h प्लस अंडर रूट x. h की वैल्यू 0 पुट करने अगर इसमें, so 1 upon under root x plus under root x. So this is 1 upon 2 under root x. So this is the answer. Alright, let's see the next question, number 4. The same limit x tends to 0, x plus 2 की power 1 by 3 minus 2 की power 1 by 3 whole divided by x. Okay, so इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक आइडेंटिटी बताता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू a, xn minus an, x minus a, this is equals to n a n minus 1. ऑलराइट, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको प्रूव भी कर सकते हैं बहुत इजीली. मैंने लाहौपिता आप लोग को बताया था, जब 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम लोग इसको ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर ऊपर अलग से डिफरेंशिएट करें तो बनेगा n टाइम्स एक्स एन माइनस 1. an तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे भी a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ n x n माइनस 1. ओके, x टेंडिंग टू a, या यहाँ पे x आना चाहिए. ऑलराइट, तो देखते हैं क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है x plus 2 1 by 3 minus 2 1 by 3 whole divided by nx. ठीक है, तो if I put, so let this x plus 2 वाली value, let this be equal to y. If this is equals to y, then x is equals to y minus 2. सिंपल. ठीक है, अब देखते हैं, और लिमिट में क्या चेंज होगा. फॉर x टेंडिंग टू 0, when x tends to a 0, y tends to a 2. ठीक है, तो लिमिट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, वैल्यू पता चल रही है. Let's move on. अब हम लोग का क्वेश्चन बन गया है ये. ठीक है, तो अब ऊपर नीचे अलग अलग अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसे, 1/3 टाइम्स y, 1/3 minus 1 minus 2/3, 0, और डिनोमिनेटर में 1. लिमिट क्या पुट करनी है, y टेंड्स टू 2. ठीक है, तो 2 की यहाँ पे पुट कर दें, 2 की पावर माइनस 2/3 divided by 3. This is your answer. Okay, now let's move on to the next question. Question number 5. Limit of x tends to a 1, tends to, right, and 1 plus x whole की पावर 6 minus 1 whole divided by 1 plus x का whole square minus 1. ठीक है, अगर मैं इसमें भी वैसे ही सॉल्व करूँ इसको, अगर मैं 1 plus x को ले लूँ सम कांस्टेंट y, तो जब x की वैल्यू 1 को टेंड करेगी तो y की वैल्यू 2 को टेंड करेगी. ठीक है, तो अब अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं, लिमिट y टेंड्स टू 2, यहाँ पे हो जाएगा y 6 minus 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1. इसको भी इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग वैसे भी जैसे एल ओपिता से अभी हम लोग ने आपस में इसे डिवाइड किया था वैसे भी कर सकते हैं. ऑलराइट, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो y 6 minus 1 नीचे तो बन जाएगा y plus 1 और y minus 1. ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके साथ, y6 को भी एक्स्ट्रा खोल सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग के पास था न्यूमरेटर में we had a y6 minus 1 and in denominator we had y square minus 1. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग y minus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, y6 minus 1 divided by y minus 1 into 1 upon y square minus 1 divided by y minus 1. ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम लोग को पता है. इसके दो अलग अलग लिमिट समझ सकते हैं हम लोग. लिमिट
y tends to 1 for y 6 minus 1 divided by y minus 1. ओके, और ये पूरा डिवाइडेड बाय लिमिट y tends to 1 for y square minus 1 divided by y minus 1. ओके, अलग अलग एलोपेटा अगर हम लोग इस पे लगा दें, यहाँ पे क्या बन जाएगा 6/5, तो 6/5 y की वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2y, y की वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 3. ऑलराइट, let's see the next question. The next question we have is question number 6. Question number 6, which is limit x tends to a, 2 plus x की पावर 5/2 minus a plus 2 की पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाय x minus a. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं. इस क्वेश्चन में भी मैं वही करूंगा. अगर if I take 2 plus x equals to y and I put x is equals to a, then y will tend to what? 2 plus a. Simple. And now I'll put the values in. I'll put the limit as such. Limit y tends to 2 plus a and y raised to the power of 5/2 minus a plus 2 raised to the power of 5/2 whole divided by x minus a. And what is my x case? If I just give it a plus 2 here and minus 2 here, so this will be a y again, right? So limit y tends to a plus 2 is giving me y 5/2 minus a plus 2 divided by y minus a plus 2. Alright, तो फिर से इसमें वही एलोपेटा लगा देते हैं and it will become what? 5/2 times y 3/2, डिनोमिनेटर में 1 और ये 0 हो गए थे. Alright, 5/2 a plus 2 by 3/2. This is your answer. Okay, let's move on to the next question, which is question number 7. So in question number 7, what do I have? I have x4 minus under root x minus of 1, where limit x is tending to a 1. Alright, तो yeah, so इसको सिंप्लीफाई करके लिखने का ट्राई करता हूँ. Alright, तो अगर मैं इससे रूट एक्स कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर में, तो अंदर क्या बन जाएगा x7/2 minus 1. And what do I have in base? In base I have x1/2 minus 1. Limit x tends to 1. ठीक है. So अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ट्रीट करूँ, कैसे? अंडर रूट एक्स जो ऊपर वाला पार्ट है x7/2 minus 1, इसको मैं इसका x minus 1 अलग से दे देता हूँ, और जो नीचे वाला पार्ट है 1 upon x1/2 minus 1 divided by x minus 1. ऑलराइट, तो ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज बन गई हैं जिनको अलग अलग लिमिट्स लगा सकते हैं हम लोग. सिंपल. सो क्या बन गया हम लोग तो लिमिट x tends to 1 so root x7/2 minus 1 divided by x minus 1, correct, and 1 upon x1/2 minus 1 divided by x minus 1. ठीक है. अब इसमें दो अलग अलग तरह से हम लोग 3 जगह लिमिट लगेगी, एक बार इधर, एक बार इसमें, एक बार इसमें. फाइनली आंसर आ जाएगा. तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1, इसके लिए क्या हो जाएगा 7/2 x 5/2, x की वैल्यू है 1, तो बस यही रह जाएगा इनटू 1 अपॉन 1/2 x minus 1/2, x की वैल्यू है 1, सो इट विल बी a 1. ठीक है, तो 2 और 2 कट जाएगा and the answer will be 7. Alright, so let's see the next question. Next question we have is question number 8.
limit x tends to a 2 for x square minus 4 whole divided by 3x minus 2 minus the root of x plus 2. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इस डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हो रहा है 6 माइनस 2 रूट 4 2, और यहाँ पे भी आ रहा है 2, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो मुझे इस डिनोमिनेटर को कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिटर्मिनेट फॉर्म बने, मुझे इस डिनोमिनेटर के साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, तो 3x माइनस एक्स माइनस 2, तो 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। अच्छा, और ऊपर भी मैं बना सकता हूँ x प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा। यहाँ से मुझे ये पता चल गया है, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं फिर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x प्लस 2 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद दिस होल 3x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2, इतना लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या बन गया था, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। चलो, डिनोमिनेटर में जीरो वाली प्रॉब्लम चली गई, तो ये हम लोग का डिटर्मिनेट हो गया। अब बस लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू 2 पुट कर देंगे। ऊपर बन रहा है 4, यहाँ बन रहा है 6 माइनस 2 4, यहाँ बन रहा है 4, और बेस में 2, सो 2 टाइम्स 2 प्लस 2 4 इज इक्वल्स टू 8, which is a valid answer, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is क्वेश्चन नंबर 9, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट एट एक्स टेंड्स टू एन अंडर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 ऑफ एक्स माइनस। या सबसे पहले तो मैं इसका न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसके बेस के साथ देखते हैं क्या करना है। इसके बेस को अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ, ऑलराइट, सो इसके पास है एन 8, 8 can be written as 4 into 2, which is 4 under root 2 into under root 3, okay। and अगर 4 under root 3 माइनस अंडर रूट 2 करें तो आ रहा है 3 अंडर रूट 2, या ठीक है। और अगर 4 अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 करें तो आ रहा है -8, विच, हाँ, इधर भी सही बैठ रहा है, इधर भी सही बैठ रहा है, राइट। सो इट विल बी 4 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, या। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 8, ठीक है। x माइनस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x टाइम x प्लस 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स x प्लस 4 अंडर रूट 2 x माइनस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट 2 x plus 4 under root 2. This and this will get cancelled out. I will be left with this term, and my limit was actually x tending to an under root 2. So what will it become? It will become 2 under root 2 and 2. 2 plus 2, 4 into what do we have under root 2? Under root 2 constant. 1 plus 4, which is 5. So 2, 4, 8 by 5. Answer. Alright, let's move on to the next question, which is question number 10. Right. So in question number 10, what do we have? Limit x tends to 1, x7 minus 2, x5
plus 1 all divided by x cube minus 3x square plus 2. ठीक है। इसको भी क्वाड्रेटिक से बस ओपन कर लेते हैं। x7 माइनस x5 माइनस x5 प्लस 1 इधर के लिए बेस के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ रहा है x5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस x5 माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग x माइनस 1 से सब कुछ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाएगा सब। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड बाय x माइनस 1, तो क्या बन जाएगा x5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस x5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में सबसे पहले ऊपर आएगा x5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो x प्लस 1 x माइनस 1, तो ऊपर बचेगा केवल x प्लस 1 माइनस x5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, बेस में आएगा x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, लिमिट है x टेंड्स टू 1। तो अब सब पे केवल उनकी वैल्यू x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो x टेंडिंग टू 5 की हो रही है 1 टाइम्स 1 प्लस 1 2 माइनस यहाँ पे एलोपिटा लगा देंगे तो 5x4 माइनस 5x4 सो माइनस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा nx स्क्वायर विच इज 1 माइनस 2 टाइम्स और 1 प्लस 1 2, सो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 विच इज 1। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट डू आई हैव? I have a question number 11. The limit x tends to a 0 under root of 1 plus x cube minus under root of 1 minus x cube whole divided by x square। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 1 plus x cube minus under root 1 minus x cube whole divided by x square 1 plus x cube plus minus x cube। ऑलराइट, सो ऊपर तो बन जाएगा 1 plus x cube माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और लिमिट पुट करनी है x की इक्वल टू 0। so यहाँ पे पहले क्या बन रहा है 1 माइनस 1 0 माइनस में 2x क्यूब, तो बन रहा है 2x क्यूब और डिनोमिनेटर में आ रहा है x स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, मुझे लिमिट पुट करनी है x की इक्वल टू 0, सो इट विल बी 2 टाइम्स 0 अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 0 अपॉन रूट 1 it will be 0 is your answer. So now let's move on to question number 12. So in question number 12 we have been given the limit x tends to minus 3 for x cube plus 27 and x5 plus 243, right? तो क्योंकि x जो हम लोग को दिया है वो नेगेटिव है और जो पावर्स हैं वो ऑड है। ऑलराइट, so when we'll square when we'll put that x to that power,
we'll get a negative value and that will make a 0 by 0 form. ठीक है, तो इस पे भी एल ऑर्बिटल लगा देते हैं, अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं. सो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस माइनस 3 का क्यूब एक्स 5 माइनस माइनस 3 की पावर 5. अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दूं एक्स माइनस माइनस 3 एक्स माइनस माइनस 3 से. सो पहले तो एक बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3 फॉर एक्स क्यूब माइनस माइनस 3 की पावर 2 एक्स माइनस माइनस 3 into 1 upon x5 minus minus 3 की पावर 5 whole divided by x minus minus 3. ठीक है, एल ऑर्बिटल इसमें लगा देंगे 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5x4. x की वैल्यू माइनस 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, x स्क्वायर. सो 3 by 5 x स्क्वायर. सो 3 by 5 x स्क्वायर. 3 by 5 x square. What was x? X was minus 3 square. So it will be 3.59. 3, 3. It will be nothing but 1 upon 15. Alright, so this is your answer. Yeah, तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर था 12. अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो ये 12. हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था. हम लोग को क्वेश्चन नंबर करना है 13. तो 13 से स्टार्ट करते हैं. एक मिनट बस. या सो लेट्स स्टार्ट. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू हाफ फॉर व्हाट, फॉर 8x minus 3 divided by 2x minus 1 और minus 4x square plus 1 divided by 4x square minus 1. ठीक है, तो इसको खोल के लिख लेंगे पहले तो. 8x minus 3 divided by 2x minus 1 minus 4x square plus 1 divided by 2x plus 1 2x minus 2x plus 1 2x minus 1. इसको अगर 2x plus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 16x square plus 2x minus 3 और यहाँ पे आ जाएगा minus 4x square minus 1. ठीक है, तो फाइनली क्या बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2 12x square plus 2x minus 4 divided by 2x minus 1 2x plus 1. it will be nothing but दो अगर बाहर निकाल लें हम लोग. So 2 times limit x tends to 1 by 2 6x square plus x minus 3 divided by 2x minus 1 and 2x plus 1. Alright, बस यहाँ पे अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग x 1 by 2. So 1 by 2 पुट कर देंगे तो 6 by 4 plus 1 by 2 minus 2 whole divided by. नहीं, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So इसको डिनोमिनेटर में हम लोग बना देते हैं पहले तो 6x square minus 3x plus 4x minus 2 और बेस में है 2x minus 1. जब हम लोग इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 by 2 पुट कर रहे हैं तो 2x minus 1 जीरो हो जा रहा है ना डिनोमिनेटर में, वो तो मुझे अवॉइड करना है, तो इसलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा. तो क्या बन रहा है, अब आ जाएगा 3x 2x minus 1 plus 2 2x minus 1 all divided by 2x minus 1 or 2x plus 1. If I take 2x minus 1 common, it will be 3x plus 2. Denominator में I will have a 2x minus 1 or 2x plus 1. 3x plus 2 divided by 2x plus 1. यहाँ पे अगर लिमिट पुट कर देंगे 3 by 2 plus 2 divided by लिमिट अगर पुट कर दूं तो 2. So 3 by 2 plus 2, what will it be?
6, 9 by 2, 9 by 4. So this will be your answer. ये वाली बात समझ में आ गई? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि we have to find the value of n if limit x tending to 2 x raised to a power of n minus 2 divided by x minus 2 gives you the value of 80. All right, ठीक है. तो अगर मैं इसको एलोपिटाइज में लगाऊंगा तो लिमिट x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दूं तो n टू n minus 1 is equals to 80. ठीक है. तो अब बस हम लोग को इसमें यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज डाल के देखनी है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. पहले तो ये भी हो सकता है कि n टू n minus 1 को मैं या तो ऐसे लिख के देख सकता हूँ. 16 5 is 80, 16 2 की पावर 4 and 5. ठीक है. 5 times 2 की पावर 4 तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15 I have been given limit x tends to a sin 3x divided by 7x. और मुझे इतना पता है कि लिमिट x टेंड्स टू कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे 0 होगा. ठीक है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे. मुझे इतना पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन x बाय x की वैल्यू होती है 1. ठीक है. तो इसको मैं दो अलग अलग तरह से लिख सकता हूँ. ठीक है. इनटू साइन 7x 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 x x कट जाएगा 3/7 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 7x अपॉन साइन 7x. ठीक है. और दोनों पे वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3x/3x या साइन 7x/7x. उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी. तो बचेगा मेरे पास सिंपली 3/7 और वही मेरा आंसर हो जाएगा. सो माय आंसर विल बी नथिंग बट 3/7 into 1 into 1. दिस विल बी माय आंसर. ठीक है. तो आगे देखते हैं. सो आगे है क्वेश्चन नंबर 12. आगे हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 16. सर मुझे 2 मिनट का बस पॉज दीजिए. हाँ ठीक है सर. भैया अस्सलाम वालेकुम. कब आने मीटिंग चल रही है. फॉर्म भरो 10 मिनट दो उसके पहले. यस सर, लेट्स स्टार्ट. हाँ प्लीज स्टार्ट करिए. So we have to begin with the question number 16. Right? And the question given to us is limit. Yeah. So question number 16, where is it? Yeah, limit x tends to a 0. Sine square of 2x or divided by sine square of 4x. So we know that when sine gets to a 0, the value returns 0. Okay. So sine square 2x upon sine square 4x. If you multiply divide within x square, then we may get that value. Otherwise, we can just open up the double angle formulas. We can use these. And for correspondingly for sine 4x, we'll have 2 times sine 2x cos 2x. And we can further open this up for sine 2x. Alright, get back to our question. It will sine square 2x divided by 2 times sine 2x cos 2x का होल स्क्वायर. ऑलराइट, यहाँ पे क्या बन रहा है ऊपर वी आर गेटिंग अ साइन स्क्वायर ऑफ 2x एंड अ 4 साइन स्क्वायर का 2x cos स्क्वायर का 2x. sin square 2x sin square 2x will get cancelled out and I'll be left with a 1/4 of cos square 2x, where the limit for x is equal to 0. So
my cos value will tend to a 1 and I'll be left with an answer 1 by 4. Alright. So the answer for this problem will be 1 by 4. This is your answer. Let's see the next question. Next question I have with me, question number 17. Question number 17 में मुझको दिया है limit x tends to a 0 and 1 minus cos 2x divided by nx square. So cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? I can write this as cos square x minus 1, right? Or 1 minus 2 sin square x. Okay, whatever benefits me. So 1 minus 2 sin square x की वैल्यू मैं यूज करता हूँ. 1 minus 2 sin square x whole divided by x square. So 1 is getting cancelled out. I'll be left with nothing but 2 sin square x by x square. तो ये तो हम लोग की आइडेंटिटी बन ही गई. 2 times limit x tends to 0 sin x by x का whole square, which is nothing but 1. So the answer will be 1. Alright, let's move on to the next question. So अगला question है question number 18. So question number 18 start करते हैं. I'm having my limit x tends to 0 2 sin x minus sin 2x whole divided by n x cube, right? So let's just open this up. 2 sin x, double angle formula for sin 2x, 2 sin x and cos x whole divided by n x cube. Alright, I'll take 2 sin x common, so it will be 1 minus cos x and I have n x cube. So ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज बन रही है, 1 minus cos x वाली भी और 1 minus sin x वाली भी. इसको वैसे भी कर सकते हैं, otherwise I can just simplify it further. Okay, so I can write this as 2 sin x 1 minus, it was a cos, so 1 minus 2 sin square x by 2. Alright, and in denominator I have an x cube. So I'll write this as sin x upon x. Here I had 2 here and 2 from there, so it will be a 4. Alright, so x by 2, I can write this x by 2 ka whole square dot sin x by 2 divided by x by 2 इसका whole square. Alright, 4 common आ चुका है बाहर and limit is x tends to a 0, so it will be a 1 into 1 into 4 is already out, so the answer will be no wait a minute, कुछ मिस किया है. sin x by x by 2 का whole square. अच्छा, एक डिनोमिनेटर में भी 4 आएगा due to that into 1. Answer will be 1. So the next question is question number 19. What is it? The limit x is tending to a 0. 1 minus cos mx divided by 1 minus cos nx, right? Cos mx को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? Cos mx is nothing but 1 minus 2 sin square mx by 2. 1 minus 2 sin square mx by 2. Okay, and yeah, so let's see what we can do with this information. So in numerator I'm going to have 1 minus whole thing 1 minus 2 sin square mx by 2 mx by 2, and in denominator I'm going to have 1 minus 2 sin square nx by 2. Alright, now what will it become? It will become sin mx by 2 whole square. Simplify, simply just open up this bracket and simplify the whole form. It will be 1 minus 1 0 minus this 2, it will get a plus 2, and same thing will happen here. 2 will get cancelled out, so sin mx by 2 ka whole square is going to be divided by sin nx by 2 ka whole square. Okay, now what happens is I'm getting left with so what was my limit? Limit was x tends to a 0, and in the denominator I've been left with sin mx by 2
If I divide it by mx by 2, put it a whole square. So further I have to put an mx by 2 plus square in numerator also. Okay. Further multiplying it by, if I multiply by, it is a multiplication, right? So 1 sine nx by 2 whole divided by nx by 2, इसका whole square. So I'll have to multiply this whole thing by 1 upon nx by 2 का whole square. So this whole thing will be a 1 and 1, simple. And what I'm being left with here, mx by 2 into nx into 2 whole square. So m square upon n square will be my answer for this problem, right? Let's move on to the next one. Next one, what do I have here? My limit x is tending to a pi by 3, and the numerator is 1 minus cos of 6x under root 2 times pi by 3 minus x. Yeah. So what can we do with this? We simply put the value of x. No, there's a bracket here. Where is the question? हाँ ये क्वेश्चन में 20th. या तो यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, अगर नहीं बना खुद बना लेगा, वरना तो ये नीचे अपने यहाँ पे डिटर्मिनेट बन रहा है. और लाइक सिंपली इसको खोल लेते हैं. पहले तो मैं लिखूंगा ऊपर 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3x न्यूमरेटर अंडर रूट 2 pi minus 3x एक 2 पर भेज देता हूँ. Alright, if I further open this up, 3 times 2 sine square 3x under root 2 times pi minus 3x, right? And the limit for x is what? Pi by 3. So if I just simply plug in the values in this given identity, what will I get? For sine x all apart, 3 will be like coming outside this limit, and I'll be having my under root 2 by under root 2 giving me a value of 1. Here I have sine 3x, and here I have pi minus 3x, x pi by 3. Yeah. Still it is giving me a 0 by 0 form in the denominator, right? So I'll just simplify this. या तो ये बताओ sin 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 3x को we can simply write as pi minus 3x. Why? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, राइट? इन द सेकंड क्वाड साइन रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू. ऑलराइट, so sin pi minus 3x divided by pi minus 3x, it will give me a value for 1. okay, अब मुझे लिमिट भी चेंज करनी है. pi minus 3x को y मानते हैं. For x tending to that, y will tend to 0. For x tending to whatever, y will tend to a 0. Alright. So my new question will be 3 times limit y tending to a 0 sin y by y. Sin y upon y. So it will be nothing but 3. That will be my answer. Alright. So अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग को दिया है लिमिट x टेंड्स टू अ पाई बाय 4. लिमिट x टेंड्स टू अ पाई बाय 4 फॉर sin x minus cos x all divided by x minus pi by 4. x minus pi by 4. Right? So yes. So let's begin. तो sin x minus cos x है. Again, under root 2, right? So sin x into 1 upon under root 2. I can write this as cos 45 degree. That is why I've given this value under root 2 deliberately. Cos x into 1 upon under root 2. Alright, and in denominator I have x minus pi by 4. So this value will attain under root 2 times sin x cos pi by 4 minus cos x sin pi by 4
Alright, let's move on. So in denominator, I'll be left with what? X minus pi by 4. Why? This is the open angle formula. And here I have x minus pi by 4 already, or under root 2. Okay. And what was my limit for this question? Limit for this question was, and x was tending to a pi by 4. Okay, let's suppose a y. Let's put x minus pi by 4 equal to y. And for x tending to a pi by 4, y will tend to a 0. Right? So my new question will be sin y by y. This whole thing will attain a value for 1, and that will be my answer. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22. I have been given a limit for x as pi by 6. Alright, root 3 times sin x minus cos x divided by x minus pi by 6. Alright, तो इसमें भी मैं अंडर रूट 2 वाला ट्रिक लगा सकता हूँ. रूट 3 by 2 times sin x minus 1 upon under root 2 times cos x. ठीक है, and this will give me what? This will give me cos pi by 6 sin x minus cos x and sin pi by 6. तो ये ऊपर बन जाएगा sin of x minus pi by 6, and pi by 6 I already have in the denominator as well, so this just eases my job further. तो यहाँ पे मैं x minus pi by 6 को ले लेता हूँ y, right? And as x is tending to a value of what? X is tending to a value of pi by 6, right? So y will tend to a 0. Y will tend to a value of 0. So now 2 बाहर का constant, limit y tending to 0 sin y upon y. This gives me a value of 1, so the answer will be 2. Okay. Now next question, question number 23rd. In question number 23rd, I have been given limit x tends to a 0. X tends to a 0. Sin 2x plus 3x whole divided by 2x plus tan of 3x. Alright. दो आइडेंटिटी हम लोग को पता है, सिंपल sin x by x for limit x tends to a 0 gives me a value of 1. Same thing happens for x tending to 0. Tan x by x also returns the value of 1. Alright. Now let's see. Yeah. So let's get back to that question. So अगर मैं x से डिवाइड कर दूं ऊपर वाला पार्ट, तो sin 2x by 2x, let's suppose 2 भी है, and here I have 3x by x. सबको मैं x से डिवाइड करता जा रहा हूँ. Here I have a 2 plus tan 3x 3 upon 3x. Alright, अब बस मुझे सबकी लिमिट पुट करनी है. 2 plus 3 by 2 plus 3 is 1. This is your answer. Alright, now let's see the next question. So in next question, question number 20, question number 23rd. Yeah, question number 23rd भी अभी किया हम लोग ने. So next question will be question number 24. In question number 24, what do we have here? Limit x tends to an a, and I have been given sin x minus sin a divided by under root of x minus under root of a. Alright, तो x की वैल्यू a यहाँ पे पुट करेंगे तो काम नहीं चलेगा. Alright, so we have to simplify it. sin a minus sin b, इसका अगर फॉर्मूला याद है हम लोग को, then we can proceed with a very different approach. We can just write this as 2 sin x minus a by 2 and cos x plus a by 2. Alright, and in denominator I have under root x minus under root a. So बेस के साथ भी इसको भी हम लोग ठीक करने के लिए ये कर सकते हैं कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए. तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 2 times sin
x minus a by 2 cos x plus a by 2 multiplied with अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए ऑल राइट और यहाँ नीचे आ जाएगा सिंपली x माइनस ए ठीक है लिमिट है x टेंड्स टू a right so let's see what we can do with this so x minus a and I have a 2 as well in the numerator so I'll just write this further as x tends to a value of a sin the angle becomes x minus a by 2 cos x plus a by 2 a constant under root x plus under root a as well and in denominator I'll be having x minus a by 2 all right so what can I do with this यहाँ पे I can treat this as a single identity right अगर I'll do that I'll just be getting a 1 here into cos x plus a by 2 x value a so 2a by 2 and cos a times under root a plus under root a 2 under root a so the answer for this problem will be 2 under root a times cos of a so this will be the answer so I think we are done for today sir rest I'll continue from the next class whenever that might be